Good morning children. In today's activity we will discuss about continent and oceans. So there are two features of the major feature of the earth, continent and oceans. So what are continents? Continents are the large landmass which is separated by water bodies, and oceans, the large water bodies are called oceans. So there are 7 continents and 5 oceans on the earth. Let's see 7 continents: Asia, Africa, Europe, North America, South America, Australia and Antarctica. There are 7 continents and there are 5 oceans: Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Southern Ocean and Arctic Oceans. Let's see in world physical map. There are 7 continents. Asia. First is Asia. So Asia is the largest continent. It covers nearly 1/3 of the total land area of the earth. It lies in northern hemisphere. ये नदर्न हेमिस्फीयर में है और ये पूरे वर्ल्ड का टोटल लैंड का 1/3 पार्ट है. And second largest continent is Africa. This is second largest continent and it is bounded by the Atlantic Ocean on the west and the Mediterranean Sea in the north and Red Sea in the east. ये जो है अटलांटिक ओशियन, इसके वेस्ट में अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी एंड ईस्ट में रेड सी है. एंड द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज नॉर्थ अमेरिका. दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड इट लाइज कंप्लीटली ऑफ द नदर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. ये कंप्लीटली नदर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है एंड इट इज सराउंडेड बाय 3 ओशियंस. ये 3 ओशियन से सराउंडेड है. In the west, Pacific Ocean; in the east, Atlantic Ocean; and in the north, Arctic Ocean. South America. This is the South America. This is the the equator passes through the northmost part of this continent. Equator line इसके northmost part से निकलती है, गुजरती है. And the next continent is Antarctica. Antarctica is a huge continent around the South Pole. एक बड़ा continent है, ये South Pole पर है and always covered with ice or snow. हमेशा ice और snow से covered रहता है. And the next continent is Europe. Europe is the smallest continent. ये जो है यूरोप जो है स्मॉलर कॉन्टिनेंट एज कंपेयर टू एशिया. एशिया के कंपैरिजन में ये स्मॉल है. एंड द नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया. दिस इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट. द ओशियन सराउंडेड इट ऑन ऑल साइड मेकिंग इट आइलैंड. एंड ये जो है ओशियंस इसके चारों तरफ ओशियन से सराउंडेड है और जिसको ये आइलैंड बनाते हैं. दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज आइलैंड कॉन्टिनेंट. इसीलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है. नाउ द ओशियंस. लेट्स सी द ओशियन इन द वर्ल्ड मैप. यस, द फर्स्ट इज पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, Southern Ocean and Arctic Ocean. Pacific Ocean is the largest continent and this is roughly circular in shape. ये जो है circular shape में है Pacific Ocean और ये सभी ocean से जो all oceans हैं वो एक दूसरे से interconnected है. And second largest continent is Atlantic Ocean. This is also known as busiest ocean because it supports a trade relation between various countries and it has many harbors and ports. So this is second largest ocean on the earth. And the third largest continent is Indian Ocean.
This is located in the south of India. That's why it has named Indian Ocean. इसलिए इसको Indian Ocean के नेम से भी जाना जाता है. And this is the third largest continent. And the next one is Southern Ocean. Southern Ocean is also known as Antarctic Ocean. The next, the smallest ocean is Arctic Ocean. It lies on the North Pole. North Pole पर है. That's why it always covered with ice or snow. And it is frigid throughout the year. Okay. So these are the oceans and continents. So hope you all have understood.